Ludhiana is one of the two largest cities and largest industrial hub of Punjab. Known as the Manchester of India, Ludhiana in Punjab is famous for woolen hosiery and constitute a sizable chunk of cotton hosiery market. About 90% of nation's output of woolen acrylic hosiery comes from this region. Ludhiana Knitwear cluster has highly diversified base with about 11,000 formal and informal firms and employs more than 2 lakh workers. The knitwear industry has a range of firms employing 50 to 2,500 workers depending upon size of the firm, that is large, medium or small. Beside these, there are about 9,000 small fabricators or independent job workers who own basic knitting and fabricating equipments and knit or process woolen garments for other larger manufacturers, but do not finish them. There are a large number of women home-based workers in this group who do embroideries and related tasks. The Ludhiana knitwear industry manufacture vast range of products, which includes a range of products for winter wears like sweaters, woolen socks, pullovers, cardigans, thermal wear, gloves, mufflers, caps, shawls, jackets, jersey and blankets. And for summer wears, the product includes t-shirts, cotton and blended socks, undergarments, knitted bed sheets, skirts, tops, sportswear, night suits, and the list is endless. Vinod Thapar, President Knitwear Club, Ludhiana. Ludhiana is a capital of industrial capital of Punjab. तो लुधियाना में कोई 12,000 से लेके 14,000 तक यूनिट्स हैं, इंटरप्राइजेस हैं। तो 90% वुलन सप्लाई लुधियाना से ऑल ओवर इंडिया होती है। इसको लुधियाना लोन केटर करता है। हम 2 लाख से लेके 3 लाख तक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। ये लुधियाना का टोटल सिनेरियो है। तो हॉजी में वुलन्स में स्वेटर, जैकेट्स, मफलर्स, एक्सेसरीज, थर्मल, कैप आदि हम बनाते हैं। और समर्स में टी शर्ट्स, कॉटन एंड ब्लेंडेड एंड गर्ल्स ड्रेसेस, गर्ल्स टॉप, ये हमारे लुधियाना इंडस्ट्री की स्पेशलाइजेशन है। A series of training program at firms and at institute and villages were organized. More than 600 female workers have been trained under the project for various operations. As a result of intervention, the firm have started looking at alternative means of manpower. Female employment, which at one time of diagnostic was considered impossible, has actually become a reality in the cluster, and more firms are adopting this model of training and employing female as stitching operators. The approach of the firms towards labor is changing in the form of transportation and better facilities for the workforce, resulting in less exploiting of the workers. ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 3500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕੇ। लुधियाना को अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कुछ अपनी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसमें खास तौर पे स्किल लेबर की है। तो हमने एक डायग्नोस्टिक स्टडी करवाई और उसमें ये पाया गया यहाँ माइग्रेटरी लेबर्स ज़्यादा है और उसको रिप्लेस करने के लिए हमको कुछ ना कुछ उसकी ज़रूरत थी। हमारे यहाँ लेबर की डे बाई डे शॉर्टेज बढ़ती जा रही है और एक्यूट शॉर्टेज है आज की तारीख में। तो हमने फिर एक डायग्नोस्टिक स्टडी कराई, नेटवर्क क्लब ने, अपेक्स क्लस्टर और यूनिवर्सिटी से मिलकर। उस स्टडी में हमने ये पाया कि वुमेन वर्कफोर्स को अगर ट्रेन किया जाए तो इसकी कमी पूरी की जा सकती है। उसमें स्टडी में 40% वुमेन वर्कफोर्स की ज़रूरत है, जबकि आजकल इसकी 5% से कम की इन्वॉल्वमेंट है। तो हमने इंस्टीट्यूट पे और गाँवों में जाके, विलेजेस में जाके अपने कैंप स्टार्ट किए, ट्रेनिंग कैंप, खासतौर पे सिलाई में हमने लड़कियों को वहाँ ट्रेन करना शुरू किया और उनकी साथ हमने प्लेसमेंट देनी शुरू कर दी। और ये 600 लड़कियों को तैयार करके हमने फैक्ट्रीज में उनको प्लेसमेंट दवाई। ये हमारी एक बहुत ही सक्सेस स्टोरी है, हमारी और अपेक्स क्लस्टर की ये अच्छी स्टोरी है। Energy efficiency exercises were conducted in 13 firms. Major works have been accomplished in the field in dyeing and finishing mills, which are highly energy intensive units. A large number of dyeing units have opted for energy saving exercises with or without the project support, with remarkable saving to the tune of 8 to 25%, depending on the adoption of recommendation of the auditors and the investments made. हाँ जी, मैं ओसफोर्ड डाइंग से अतुल मल्होत्रा, डायरेक्टर ऑफ कंपनी। ऐसा है, हमने 4 मार्शल से ऑडिटिंग करवाई थी, एनर्जी ऑडिटिंग। तो उसमें हमने 2 पॉइंट्स लिए थे। फर्स्ट इज स्टीम एंड सेकंड इज वाटर। एनर्जी ऑडिटिंग में हमारे जब वो 4 मार्शल वाले आए थे तो उन्होंने हमारा जो पूरा प्लांट ऑडिट किया, 2 से 3 दिन लगाए। उसके अंदर हमारी पाइपलाइन वेस्टेज एंड अपना जो ट्रैप्स हैं उनकी ऑडिटिंग की उन्होंने, पाइप साइज की ऑडिटिंग की, वेस्टेज ऑफ स्टीम की ऑडिटिंग की, बॉयलर पे जो हम अपनी स्टीम जनरेट कर रहे हैं उसकी ऑडिटिंग की। उसके बाद उन्होंने हमारा जो कंडेंस वाटर है उसकी ऑडिटिंग की। उस ऑडिटिंग में उन्होंने पाया कि हमारा जो हम फैक्ट्री के अंदर 25 to 30% हम लॉस कर रहे हैं। तो वो लॉसेज उन्होंने कुछ हमारे को इंस्ट्रूमेंट बताए, जैसे कि बॉयलर के ऊपर उन्होंने हमारा फ्लैश रिकवरी का एक सिस्टम बताया। उन्होंने फ्लैश रिकवरी के सिस्टम से हमारी 5 से 10% रिकवरी हो गई थी। वो सिस्टम ऑलरेडी हमारा ऑर्डर में था, उनके ऑडिटिंग के टाइम ही हमने उसको वहाँ इंस्टॉल किया और प्रैक्टिकली हमने चेक किया कि वो रियलिटी में 5 से 10% एफिशिएंसी उससे हमारी इंक्रीज होगी। जो बॉयलर में हम पानी का जो टेम्परेचर है 50 to 60 डिग्री दे रहे थे, वो इंक्रीज हो गए 80 to 90 डिग्री हो गया। देन इससे कि हमारा जो वो है अपना प्रॉफिट है वो 5 से 10% बढ़ गया। देन उसके बाद हमने जो हमारे ड्रायर थे, जो ड्रायर्स में हमने ओल्ड ड्रायर लगाए हुए थे, उसके अंदर हमारी जो एफिशिएंसी थी उसके अंदर भी हम बहुत वीक चल रहे थे। वो उन्होंने बताया कि आपका जो एवरेज है, पीछे जो ट्रैप्स लगे हुए हैं, ट्रैप्स की ऑडिटिंग में पाया कि कोई भी ट्रैप्स ढंग से काम नहीं कर रहा था। उन ट्रैप्स को हमने चेंज करके नए ट्रैप्स लगाए और ट्रैप्स से भी हमारी 2 से 3% एफिशिएंसी बढ़ गई।
उसके बाद हमारे जो ड्रायर थे वो टोटल हमारे 16 पोल लगाए हुए थे, जो कि आज की डेट में वो हमारे 10 पोल चल रहे हैं। 10 पोल हमारी उतनी एफिशिएंसी दे रहे हैं जितनी 16 पोल दे रहे थे। वो भी एक ऑडिटिंग का पार्ट है, उसमें हमारी काफ़ी सेविंग हो रही है, इलेक्ट्रिक सेविंग, पावर सेविंग, एनर्जी सेविंग, जस्ट लाइक मैन पावर, जो कि बेसिकली आज की डेट में सबसे ज़्यादा है। मैन पावर उसमें हमारे 4 आदमी 1 शिफ्ट के अंदर कम हो गए। ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो कि मतलब भी हम कर रहे हैं, और फ्यूचर में भी हमारी बहुत ऐसी प्लानिंग्स हैं जिसको हम अंडर रखे हुए हैं कन्वर्सेशन में। तो उसके अंदर हमारे डे बाय डे, जैसे कि मशीन्स के अंदर हमारी लिक्विड रेशो ऑडिटिंग में उन्होंने बताया था कि हमारी जो मशीन्स हैं 1:14 लिक्विड रेशो की मशीन्स हैं, बेंचेस लगी हुई थी, वो हमने सारी डिमोलिश करके नई सॉफ्ट फ्लोर लगाई हैं। वो भी एक ऑडिटिंग का पार्ट है। बाकी हम बेसिकली शॉर्टली में बता सकते हैं कि जो उन्होंने हमको बताया उसके अंदर अगर फाइनली हम 100% इम्प्लीमेंट करें तो हमारी मैक्सिमम सेविंग हो सकती है। अपेक्स वालों ने मतलब कि इसके अंदर हमारी काफ़ी मदद की है, जो कि हमारी ऑडिटिंग के ऊपर एक्सपेंस आना था हमारा 100%। अपेक्स वालों ने हमको इंक्रीमेंट करके मतलब कि हौसला दे के कि हम आपके साथ हैं, आप ऑडिटिंग कराएं, हम आपको हेल्प करेंगे। उन्होंने हमारा 40 to 45% हमारा साथ जो फाइनेंशियली चेक जो आना था उन्होंने बोला कि हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये उनके संजीव चौधरी जी हैं, संजीव चौधरी ने हमको काफ़ी प्रोत्साहन दिया। उनके कहने पे ही हमने ऑडिटिंग करवाई, उनके ऑडिटिंग के बाद ही हमने जो चीज़ें इम्प्लीमेंट की है। आज प्रैक्टिकली हम देखें 20 से 25% हमने जो पहले था, आज की डेट में हम उसमें परसेंटेज ऑफ मार्जिन जो है हमारा 25% इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ। हम संजीव चौधरी जी के बहुत थैंक्स हैं, अपेक्स वालों के काफ़ी थैंक्स हैं जिन्होंने कि हमको इधर लाइट दिया। हम आगे भी आशा करते हैं कि अपेक्स वाले हमको डे बाय डे नई चीज़ें बताएंगे, जिससे कि हमारे जो यूनिट की ग्रोथ है और बढ़े, और हम वर्ल्ड के अंदर अपना कंपटीशन लड़ने के लिए हर दम तैयार हैं। I am Mridula Jain. I am the MD of Shingora Textiles Limited. It's an export-oriented unit for shawls and as well as for retail within India. We are basically manufacturers and exporters. And this particular, I wanted to talk about the cluster development program from the CLUSTERKRAFT, which has benefited the industry, as I already told. But this vacuum which is still there has to be actually filled up by same kind of institutes or same kind of organizations or NGOs who would like to work with the industry after the recommendation from the ministry, so that the labor shortage in our cities in Ludhiana or Amritsar, wherever the industry is focused, that vacuum is filled up and the labor shortage is made available to us. Myself is Charanjeev Singh, Secretary Knitwear Club. This is a very good opportunity for the knitwear and the textile industry for Ludhiana. We on the cluster developments, we have worked on a very different topics and we have got a very good success story. We have got a special training for the computerized hand flat knitting machines, from where the children's or the students or the participants get the training with the imported stall knitting machines, and we get employed with them in our factories. Then later on another process that's called linking machines. We got a very good training program on the linking machines. So on the another whole, we have got another cluster development. So we have another developer LDFO, that's called Ludhiana Direct Factory Outlet, and we have got a very good retail training cluster development programs, from where all the retailers, all the customer, how to handle the customer basically. While the customer is entering in the shop, we have given a very good training to retail students and to the retail guys who has to attend the customers in a proper manner. We have given a very good know-how about the textile fabrics, the nature of the yarn and the quality of the yarn, so that they may give the very good information to the people, those are the customers. Recently we are working on many clusters. Basically we have got another with the Sport King Institute, we have got another design resource center. We have got another 50 members has been registered to update themselves with all the latest world-class design research centers. So we have given a very good opportunity, and the industry has upgraded itself, and we are getting to be world known, renewed all the products.
In the processing and the finishing, we have recently made another good achievement. We have attached all the cluster with the Knitwear Club website, where you can examine all type of the cluster developments which has taken care by the Apex cluster and the Knitwear Club and all the other connected things. On the whole, we can say we have got a very good success stories, and we are leading another way. We are help supporting to the weaker section also, those low poverty line below, and we have got employment with them. Recently we have again done a very good survey with all the other segments, and we are getting very good results from that very way. So another way, we are looking after the cluster development programs in a very good. Productivity enhancement assessment was conducted in 3 firms to identify potential for improvement. A pilot intervention was held in 7 firms for waste minimization and productivity enhancement. The cluster firm have started looking at the improvement potential available in the firm, which is extremely important to make the firms cost competitive in the global market. Especially the export-oriented unit firms are willing to indulge in such exercises. A lot of professionals from Sri Lanka had started working in the cluster in the field of lean management with remarkable results. Not only do these exercises help in reducing the wastage in these organizations, it also helps in improving the image of Ludhiana manufacturer as professional manufacturers who honor their commitment on deliveries. हरीश केरपाल, एग्जीक्यूटिव मेंबर निटवेयर क्लब, हमने निटवेयर क्लब और अपेक्स क्लस्टर के सहयोग से लीन मैन्युफैक्चरिंग लेकर, जो कि श्रीलंका के पैटर्न पे मिनिमाइज वेस्ट के ऊपर 7 फर्मों को अडॉप्ट किया, जिसपे 3 फर्मों पे हमें ज्यादा सक्सेसफुल स्टोरी मिली। एक रामा कृष्णा मॉडल के रूप में हम जिसकी मिसाल दे सकते हैं उतरा। ये प्रोडक्टिविटी के ऊपर हमारा काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल रहा। वो हम और चाहते हैं हमारी और भी फर्में दूसरी जो हौजरी यूनिट हैं, जो लुधियाना में लगभग 14,000 के करीब हैं, सारे इसको अडॉप्ट करें ताकि हम भी श्रीलंका के पैटर्न पे इससे ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकें। थैंक यू। 2 years back, it was only through word of mouth that a firm could find a designer, and its suitability for their product was a matter of hit and trial. All the designers are brought at one platform, making it easier for the firm to locate a designer that suits their profile. For the designers, earlier where they were involved in locating their own resources through various means, a common resource center increased their capacity to large extent and is a step towards making Ludhiana manufacturers fashion leaders in years to come. Sport King Institute of Fashion Technology has been recognized as a design resource center and was responsible for the upcoming Council of Designers of Ludhiana. Hello, myself Aman Kochar. I'm working as a faculty in Sport King Institute of Fashion Technology, Ludhiana. It was great being associated with the Apex cluster. They gave us the opportunity to provide help to the Ludhiana cluster. SIFT has already been approved as a design resource center from SIDBI. We had purchased a fashion website FFT program to provide the design inputs to Ludhiana medium and small scale industries. We have got 50 firms enrolled under the design resource center, and all of them are availing this facility for the product development. In future also, we are planning to increase the number of industry people who can associate themselves with the DRC at Sport King Institute of Fashion Technology. Providing the design inputs to Ludhiana cluster have been an important aim of DRC, and it could not be successfully accomplished without the help of Knitwear Club. Despite of coming and availing the design facility at DRC, we felt that there is a need of a designer club where all the designers can meet each other,
So with the support of SIDBI and Knitwear Club, we were successful in making a council for designers named as Council of Fashion Designers of Ludhiana. There are 3 founder members for this club, Mr. Nirbhay Kumar, Mr. Parveen Jathania and Mr. Amardeep Singh. All of them are working as the head designers in the reputed firms of Ludhiana. Apart from this, till now we have 50 more designers also got enrolled in this council. This club can help in giving the employment opportunities to all the upcoming budding designers of Ludhiana along with the guidance to the freshers. So ultimately designers will have a direct contact with Design Resource Center, and in this council we have already conducted a seminar on fashion forecasting where we invited Mr. Sharad Mathur, who is running his own consultancy firm from Delhi. We are also trying to involve more experts who can share their views among all of the members in this legal body. So in future we look forward to have more number of people enrolled under Council of Fashion Designers of Ludhiana. So at last but not the least, I am thankful to Apex Cluster, Knitwear Club Ludhiana and SIDBI who has provided us with the great opportunity. Also, we look forward for a long-term association with Apex Cluster. Thank you, and I wish good luck to Apex Cluster. We are very much supported by the cluster segments, and we think so that government has to reconsider for the cluster developments projects. These are very good themes, basically those sports industries in a very good way. We have got another weaker points in over segments also. We have got another very positive points with us also. On the whole, we are very much happy with the cluster development programs. So we are looking another way, because nowadays the high-tech system is coming in a very big way. All the latest equipments are going to be used for the coming times. If somebody is coming with the collection of his own samples, we have to make another shootout at that very time, and we have to looking after a latest designer studio where we can have all type of the fabrics with the latest you can say with the segments or the slides, which we can cut and paste immediately so that we can show a good results to a consumer or to our buyer, so that he can concentrate his quality and quantity at the spot and place the orders to us immediately, so that in that very way we are reducing the time which we can gain in our productions and making a product better than the others. So nice of you. Thank you. The example set up by the CLUSTERKRAFT while they were working for the knitwear industry has set our minds rolling, because they really worked very well with the knitwear industry for the training of the retailing sector as well as for the jail workers. They did a lot of work with them also, as well as for embroidery on the knitwears. So those kinds of things is being highly appreciated. That is what we also need, that in our shawl industry, where we need workers for printing, we need workers, as I already told you, in packing, in fringing, and in washing on the sulzer looms also. Right at this time, frankly, even the ministry and the people from the ministry or the industry would be surprised that we already have women workers on the weaving machines as well. So if that kind of concept can be brought in, so our local labor, which is already being very short, if they are able to tap the women workers also from the villages, so we shall be very happy, and it will be filling the gaps properly. Thank you so much.